is India on the verge of shifting its ally from the West to form a close partnership with China and Russia? Recently, SCO summit में Chinese President Xi Jinping ने कहा, "We must uphold fairness and justice. We must promote a correct view of the World War II history and oppose the Cold War mentality. We should block confrontation and bullying." This statement takes a clear dig on the West indirectly. Shanghai Cooperation Association (SCO) को formally जून 15, 2001 में बनाया गया, aiming at removing terrorism and regional security between the Central Asian countries. Almost सभी member countries ने इसमें participate किया, जिसमें majorly Azerbaijan, Belarus, Egypt, India, Iran, पाकिस्तान, रशिया, टर्की एंड सरप्राइजिंगली नॉर्थ कोरिया को बहुत हाईलाइट किया गया. इट इज़ क्लियरली पासिंग ऑन अ डायरेक्ट मैसेज टू द वेस्ट, जो अपने ट्रेड प्रैक्टिसेस से इस बार हाईलाइट्स में भी है एंड इज करंटली ऑन द वर्ज ऑफ शिफ्टिंग द वर्ल्ड ऑर्डर इनटू अ न्यू जियोपॉलिटिकल फेज. इंडिया चाइना रिलेशंस ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुए. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काउंटर टेररिज्म और पहलगाम टेरर अटैक को हाईलाइट करते हुए बीजिंग का सपोर्ट मांगा, टू विच बोथ द कंट्रीज अग्रीड टू कोऑपरेट. Kailash Mansarovar Yatra renewal and peace talks between India and Turkey were re-held in the summit. Major socio-cultural projects and AI-generated projects between the member countries, especially between the major India-China-Russia trio, were talked upon. China ने यूक्रेन क्राइसिस पर भी अपना स्टांस लेते हुए ये कहा that it was completely dominated by the West as it wanted Ukraine to become a part of the NATO. This SCO summit was one of the biggest and the fifth hosted by China, and China ने कोई मौका नहीं छोड़ा to show how it can upheaval its image as a power. It also talked upon how PLA world की most advanced fighting force बन सकती है and how the world is moving towards becoming a multipolar power led by only a single power, China.